एक तो पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा, और कोई सीरियस केसेस हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स को रिक्विजिशन दिया गया है, कंफर्म रिक्विजिशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं हवाई जहाज लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर, उनको ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए जहां तक मैं काउंट कर रहा हूं 41 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई हैं, मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर अटेंडेंट, उसके अंदर शायद उसका रिश्तेदार, अगर वहां पर साथ में उसके कोई रिश्तेदार है वो सब उसके साथ जा सकते हैं, इंडिविजुअली जा सकते हैं वहां तक, ऋषिकेश तक, और उनको एडमिट करके वहां पर उनके डिटेल मेडिकल चेक करना पड़ेगा इसका। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजों के साथ, और खास तौर पे ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंटली ये पूरी खबर दे रहे हैं, तो उम्मीदें काफी रेज हुई हैं और दिलासा मिली है, और जितने वर्कर हैं अंदर, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जागृत हुई है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है, उससे और ताकत आएगी उनके अंदर जो अंदर फंसे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाल ही में अगले कुछ घंटों में या कल तक या जब भी है, तो ये हमें इसके अंदर कामयाबी इस ऑपरेशन में मिलेगी। आपके कोई सवाल हैं अगर इसके ऊपर, खास तौर पे आखिरी चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मदद के लिए तकरीबन 4-5 फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं जो मौजूद हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया और इत्यादि देशों से। उनका रहना वहां पर हमें और दिलासा देता है और सपोर्ट देता है। इन सब का बहुत तजुर्बा है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। अंडरग्राउंड कार्रवाई जो है, अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर, अंडरग्राउंड स्पेस के अंदर काम बहुत इन्होंने किया है, तो वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा जो है वो ला रहे हैं, और एक्सपर्ट एडवाइस हमको लगातार यहां पर दे रहे हैं। We'll begin from the third row. Follow me. So, Polemy from India Today, you did mention about the fact that there seems to be some sort of halting in operations right now at the site. What has caused this? If you can just clarify that, sir. It's not the first time it's happened. This is perhaps the third time it's happened. And no one is expecting that this operation is going to go without obstacles. जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि बाधाएं तो आएंगी आपके सामने इस तरह की जियोलॉजी में, और क्योंकि वहां पर डिस्ट्रॉयड एक सबसाइडेड टनल की छत है पूरी वहां पर, उसके अंदर, तो नेचुरली दीज ऑब्स्टिकल्स विल बी देयर एट द मोमेंट। शुरू में जब जो ऑब्स्टिकल आया था 16 तारीख 17 तारीख को, उसको तो हम पार करके और 22 की रात से दोबारा शुरू कर दिया है। Again, yesterday, an obstacle had come in the form of the iron girder, which has been cut, as I told you, with the help of cutters, iron cutters. अब जो है कुछ और सामने कोई some kind of an obstacle has come and the work had stopped, but I am told that the work has just about resuming. We are not certain as to what kind of an obstacle had come there. I am not going into this, and I don't think you need to either go into the nitty-gritties of the technologies which are happening, the obstacles which are taking place. आपको फिक्र होनी चाहिए वक्त कितना लगेगा, बहुत आपका वाजिब सवाल है जो है कि कितना वक्त लगेगा, and we are explaining to you all the time. But the exact technologies of what is happening inside those pipelines, even I don't know. वो जो workers हैं हमारे वहां पर, they are doing an immense job. They are all very trained workers, and they are the ones who are using all this equipment, and there's no dearth of equipment. No dearth of equipment there at this time. I mean, there has been something which is obstructing the movement of the auger, but if you would like to explain. It is the same lattice structure जो ऊपर टनल की छत से गिरा है, वो उसी तरह के समय समय पे आ रहे हैं। इनको समय समय पे ऑगर को थोड़ा पीछे करके इसको टीम भेज के इसको काटा जा रहा है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, कभी 1.8 मीटर आगे बढ़ते हैं, कभी 1.2 मीटर आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजीज, वी हैव ऑल द स्किल मैन पावर, वी हैव ऑल द मशीनरीज। जैसे सर ने कहा, ये जियोलॉजी का बड़ी अनसर्टेन है, तो इसमें कितना समय लग रहा है वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम एक डेफिनेट स्ट्रेटेजी के तहत अपने स्किल और मैन पावर की बदौलत हम इसमें आगे लगातार बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन चल रहा है हमारा।
Sorry, come again. कल हम 45 मीटर के आसपास थे, इसके बाद आगे हम 2-3 मीटर और बढ़े हैं और लगातार हम इसमें There are टोटल मग जो गिरी है वो 62 to 65 meters is what I learned. You should probably confirm that. 62 to 65 meters. 60 के आसपास है. It's simple mathematics. मैंने कहा कि 45 मीटर अगर चौहान साहब कह रहे हैं 45 मीटर हो गया है और 62 से 65 मीटर है डिस्टेंस, तो तकरीबन 17 से 20 मीटर तकरीबन रह गया है. अगर आप परफेक्ट कंडीशंस को देखें तो 4 से 5 मीटर पर आवर होना चाहिए ऑगर की कार्रवाई. तो आप समझिए कि 4 घंटे में हो जाएगा. मगर काम ऐसे नहीं होता है. काम होता है कि आपने थोड़ा ऑगर का काम किया, ऑगर हीट अप ही होता है, उसको फिर आपने निकाला, उसका एंगल सही किया आपने. दिस इज अ वेरी टेक्निकल वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन. We'll take. Sir, Rishi from the Hindu Business Line. One clarification: this horizontal drilling that is happening through the auger, which started on 16th, I think. It started earlier. Started earlier. 45 meters has been done. Girder had come, which took more of the time. Are you anticipating more debris going ahead? Because still 17 meters is left, and as you said earlier, that a clear idea is not there how much and what sort of debris is there. So, do you anticipate, sir, that while we go this 17 meters, would we still find debris? There's no doubt about it. Your assumption is absolutely correct. I'll pass it on subsequently to Chauhan Sahab to explain to you the technology of it. But as I pointed out, 17 मीटर अगर मैं कहता हूं 17 से 20 मीटर है, तो what is this debris? Debris तो वो ऊपर से जो छत से जो गिरा है, वो छत क्या होती है टनल की? There's a lattice work there. Iron girders का lattice work है, ठीक है? There's concrete, thick concrete which has fallen down, and that is solid concrete absolutely, which has to be cut. Now at what angle has it fallen? Is it actually in the way of the auger? के साइड हट गया है, एक जगह आपको मिल गया है, तो does not mean that every meter you are going to find it, right? So you may make very quick progress and suddenly come to a halt. Probably 3-4 घंटे आपको काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद you move and you make good progress. So this is how this whole process will continue. It may take you the better part of the next 1 day, it may take you 2 to 3 days to do it. Definitely. If all goes well, absolutely. If all goes well, absolutely they'll be able to reach. Then the process will start of the actual rescue work. Not, don't consider that is a cakewalk. Yeah, it's not a cakewalk. But as sir is saying, it depends upon the situation. Yeah, because all things. हाँ, all things going well. Even one obstacle Deepak, you have to understand that agar taking out agar takes 2 hours, then sending a person inside, as sir is saying, one cannot work for a longer hours, and then again sending agar inside, it takes time. Yeah, the next one, Deepak. Sir, I am Deepak from Times of India. Idhar se, sir. Sir, maybe you will not take it otherwise, because now people also want to know. That's why I am asking. One thing that there are some reports in some Hindi newspapers, local newspapers, that ये जो मशीन आप लगाते हैं वो दांत वाला से बदल कर आपको त्रिशूल फॉर्मेट में कुछ लगाए हैं. Is it true that the machine that is used to drill has also been changed to meet the conditions? That is number one. Number two thing, is there also a proposal to put insert after 900 you have gone for 800? Also, if needed, are you ready for even putting 700 meters so that you can to reach there quickly? And third thing, don't mind, sir, you are saying that we should not jump to timelines, but your own officials who have been jumping to timeline yesterday by 11:30 in next 3 hours, people who are, I should not say responsible, like someone who is from private sector, from some other company, giving bites to all TV channels that agle 4 घंटे में हो जाएगा, 8 बजे तक हो जाएगा. You should also put little bit of check on them. Before passing it on to Chauhan Sahab to talk to you about the first 2 parts of the technical questions, let me reassure you once again. First of all, you have the full liberty. Media has all the liberty to question us on this, okay? Even with the advisory, I have kept on saying that you can say what you wish, question us on anything you so wish, right? But an important thing, that in these kind of operations, even the officials who are there perhaps are not realizing it. Many of them are not media savvy, should I say. Wrong word to use, but media savvy. कि media के सामने आकर आसान नहीं होता बात करना इतना. मगर so some people get
carried away, tempted to say there is a definition, and there is an air of expectation and excitement when you are on the field site. You can ask me as a military man, if I'm sitting in a headquarters and sitting in an operational situation, my temperament is different. So what people are there are a little more excited and telling you, we are got a stand back position and we are telling you the reality here. Take it, that good, very nice, we are very happy. If we can do this in 2 hours, 3 hours, so be it. But let's prepare the nation for a little longer haul. That is the more mature way of looking at operations of this kind. Yeah. No, there's a technology. The question of I technology. will not go into the engineering design of the auger blade, what shape it has taken place. The second question is about it's a telescopic design. That initially we went for the 900 mm dial, later on 800 mm dial. So right now, as far as the force is concerned, we are finding it okay. But if the situation arises, at that time, team will take a call. Yeah, please go ahead with your question. Sir, I'm Aditi Tandon from. This was Lieutenant General Syed Atla Hasnan and Mr. Chauhan explaining the nitty-gritties of how this entire exercise is going on in Uttarkashi. The government has informed us that the distance is about 62 meters, out of which 45 meter has been done. They met with some sort of hindrance last night when the auger machine could not penetrate through and some debris fell. That is why they had to recalibrate and again start the process. They refuse to give any time frame right now, but people who are there on the ground zero are talking about how this operation can be over if everything goes all right in the next 24 to 48 hours. And as hopes and prayers, hopes have increased post successful delivery of foods, medical supplies and all. And also you have to understand the fact that the government is prepared, completely prepared for all kind of eventuality. They have stationed 41 ambulance, that is 1 ambulance per labor which is there. So government is making all kind of efforts to ensure that that nothing untoward happens. A makeshift hospital has been there to provide initial medical facility to the god, and then the situation can proceed without any casualty. My colleague Nivriti Mohan, who is right there at Uttarkashi monitoring how the entire thing is going on, spoke to former advisor to Prime Minister's office Bhaskar Khulbe about the ongoing operation. Let's listen into this. We have right now Bhaskar Khulbe, the former PMO advisor with us, who is looking after the rescue operations over here. Sir, how is the rescue operation going on? And there was an obstruction that was there yesterday night. So has it been cleared? What was the obstruction? The obstruction was a lattice girder that was at the mouth of the pipe that we had thrust yesterday, 45 meters. That obstruction has been successfully removed, and the entire work is now focusing on reassembling the pipes for a fresh push of 6 meters, which takes, besides assembly, welding and pushing, roughly about 4 hours. Our calculation as of now is that we have to negotiate a distance of 60 meters to safely reach our friend workers who are trapped inside. So if it is 60, 18 meters more means that roughly about 14 to 15 hours, unless something else happens, are required to reach the site, and we hope that we will be able to do that. How many meters have been navigated? 45 meters. It was told that up to the obstruction came at about 50 meters, in between 45 to 50 meters. Is it so, sir? No, we have only done 45. Okay. So we have only done 45. So there is no point in talking about what has happened beyond 45. No one has actually gone beyond 45. So how when do you expect the workers to be out of the tunnel? No, as I said, plain calculations are that 14 hours would be required to reach the site. Thereafter, preparatory work by the NDRF team, which is already here, will take about an hour or 2 hours, and then we will be able to get them out if everything goes on as smoothly as it is now. Okay. There were talks that the auger machine has also been damaged due to falling of the girder inside. Had the girder fallen with the muck, or
without muck? No, it was at the mouth of the pipe that the lattice had come. So, auger has been repaired to the extent it could be, and we have taken corrective steps to improve the movement of the auger inside the pipe. What are the medical arrangements that have been made? Everything that is required is here. So this was Bhaskar Khulbe, the former PMO advisor, and the man who is looking after the rescue operations over here, who was talking to us, and he's told us that he has confirmed on 45 meters of digging, and the pipes have been inserted up to 45 meters. That was the update that we had got yesterday. So this is the official update that is coming from Bhaskar Khulbe right now, and remaining 18 meters, he says, is yet to be digged and yet to be drilled, and pipes have to be inserted through the drilled portion. So he is saying that it is the auger machine was not damaged, and they are resetting the auger machine to insert the pipes that are of different dimensions. Like they are using pipes of dimensions like 900 meters, 900 mm, 800 mm, 700 mm. So the machine needs to be adjusted accordingly. So that is what is being done right now, and they are hopeful that the workers will be taken out soon, but how much time will it take? He has not confirmed it. Nivriti Bohan, News 9 Plus. That was my colleague Nivriti Mohan speaking to former advisor to Prime Minister's office Bhaskar Khulbe, who was looking at the overall ongoing rescue operation. Meanwhile, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami also visited the site, also visited Uttarkashi, and spoke to various labourers who are inside their tunnel. And apart from that, the international tunneling expert Arnold is also there. They have given detail about how tough the task is and how quickly we can see those labourers out of that tunnel and rescue operation be completed. Let's listen into what Pushkar Singh Dhami and Arnold had to say. 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। 41 men are coming home. I don't know when. They're going to be safe, okay? Can we cut the steel part? Top of the mountain, make sure that door's okay, the side of the mountain, that door's okay, the back of the mountain. But this front door, at the moment, it's like we're there, we're knocking. Yeah. We know the guys are on the other side, but we can't get in. So I'm just going to go have a look and see what's happening. That was Arnold Dix, who is a global tunneling expert and has been here for the last 3-4 days giving us details about how much task is left. Because, initial there were, earlier there was, reports, and also as Bhaskar Khulbe said that people thought that, the labourers will get out of that tunnel in 14 to 16 hours barring any exigency. But now what we are gathering is that 18 meters, approximately 18 meters, give or take a meter, tunneling is still left, and the entire tunneling process had to be stopped yesterday because of some debris falling on the auger machine, which led to the blunting of the tip, and the entire operation had to be started again. I think that the entire country, along with Prime Minister Narendra Modi, are very keenly watching this rescue operation which is going on. As you can see, the visuals on our screen of how daunting the task is, and how they have to be very, very careful in ensuring that they do not trigger another round of debris falling, which will hamper the entire rescue operation. Has been more than 10 days now. Food and medical supply has been given. You can see all the JCBs and other machines which are lying right next to the tunnel. This is the inside tunnel picture which is emerging, which is there on the screen.
and also the fact that, now the latest information which has come in is that 45 meters of digging has taken place. Approximately 17 to 18 meters is still left. Lieutenant General Syed Atta Hasnan has said, asked media not to speculate, but we were only echoing the time frame which people at the site are saying. But it looks like that it can be this late evening or tomorrow early morning. The rescue operation is likely to be completed, but now authorities are not giving any kind of time frame. They're saying, let's see, a day or two max, this entire operation will go on, provided there's no fresh falling of debris as far as the rescue operation which is going on. And our colleague Nivruti Mohan, who's there at Uttarkashi, she has been tracking every development which is going on. Let's listen into what she has to say about the ground situation and how long it is going to take as far as the completion of this entire evacuation process is concerned. अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो हम आपको इस टनल का ही नज़ारा दिखा देते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि काम चल रहा है, कार्य चल रहा है। सुबह सुबह के समय में एक एम्बुलेंस कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर एम्बुलेंस में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लाया गया था और अंदर तक पहुंचाया गया था, तो काफ़ी हलचल मच गई थी कि ये एम्बुलेंस किस लिए ले जाई गई है, क्या कोई घटना तो नहीं घटी है। लेकिन बाद में पता चला कि एम्बुलेंस बाहर खाली ही वापस आई थी, शायद कुछ मशीनों को अंदर तक पहुँचाया गया था। आप अभी वहाँ पर देख सकते हैं जो लोग इस मलबे की क्लियरेंस में लगे हुए हैं और ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, वो लोग भी आपको अभी टनल के अंदर नज़र आएंगे। लगातार टनल से मशीन के चलने की आवाज़ आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा धुआं भी उठ रहा है जो कि मशीनों से उठ रहा है, और अलग अलग तरीके की मशीन्स भी आप देख पाएंगे किस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत ही हाई क्लास, हाई दर्जे की मशीनें हैं जो यहाँ पर न सिर्फ देश भर से बल्कि बाहर से मंगाकर इस्तेमाल की जा रही हैं। आप देखिएगा किस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो पता चला है, हमें जानकारी मिली है, लगभग 30 से 35 बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, और छोटी मोटी मशीनें जो हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है उसका आंकड़ा तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बड़ी मशीन्स जो हैं, जो काफ़ी बड़ी हैं, उनका 30 से 35 मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त, चाहे वो एनडीआरएफ के हों, एसडीआरएफ के हों, ओएनजीसी के हों या अलग अलग एजेंसीज जो भी यहाँ पे काम कर रही हैं, उन वर्कर्स को आप देखेंगे या चारों तरफ अलग अलग एजेंसी के वर्कर्स आपको नज़र आएंगे। तो ये वर्कर्स की संख्या भी कम से कम 250 से 300 के आसपास जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप सुरक्षा एजेंसी को भी देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हो या आईटीबीपी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया कर्मी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, देश भर से मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और रात भर से एक्चुअली कल शाम में जो अपडेट मिला था वो ये मिल रहा था कि बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। जब तक ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई थी तो उसके पहले तक ये अंदाज़ा था कि हो सकता है कि रात भर में ही जो अंदर वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सकेगा, लेकिन क्योंकि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, दिक्कत पेश आ गई, तो अभी ऐसा नहीं हो पाया। यही वजह कि रात भर ये मीडिया कर्मी भी यहीं पे मौजूद रहे और रात भर कोई भी अपने होटल्स में जहाँ जहाँ भी इनकी बुकिंग्स हुई थी वापस नहीं गए। तो बाकी अथॉरिटीज़ का आना जाना भी लगा हुआ है और कुछ वीआईपीज़ के आने की भी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही ये अगर आपको ये बैरिकेड दिखाएंगे हम, इस बैरिकेड से आगे मीडिया कर्मियों को जाने की इजाज़त नहीं है, बस यहीं तक आप आ सकते हैं। यहाँ से जितनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो कुछ आप व्यूज़ दिखा सकते हैं, विजुअल्स दिखा सकते हैं, बस यहीं तक आप दिखा पाएंगे। साथ ही आप वो येलो कलर में ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ऊपर एक टेंट सा लगा हुआ है जहाँ पे एनडीआरएफ के लोग हैं, ऊपर आप देखेंगे। उसके नीचे एक ब्लू कपड़े से ढकी हुई एक बिल्डिंग है और वही टेंट भी लगा हुआ है काले कलर रंग का। उसके नीचे जो पीली दीवार आपको दिख रही है और कुछ मेडिकल फैसिलिटी का सामान भी दिख रहा है, तो ये एक मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे टेम्परेरी बनाई गई है कि अगर जब वर्कर्स को बाहर निकाला जाएगा
तो उस समय अगर किसी को फर्स्ट एड की या इमीडिएट मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि सभी को ही इस मेडिकल रूम में ले जाया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सभी को ही प्राइमरी हेल्थ चेकअप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये मेडिकल फैसिलिटी सेटअप की गई है और यहाँ वर्कर्स को लाया जाएगा पहले, और फिर उसके बाद किसको कहाँ पहुँचाना है, कौन से अस्पताल में पहुँचाना है, ये तय करके फिर उन्हें आगे भेजा जाएगा। This was my colleague Nivriti Mohan, who was giving us the lay of the land as to how the entire evacuation process, the ongoing rescue operation is going on. How many agencies, NDRF, BHAL, BRO, Border Road Organization, which is preparing makeshift routes for heavy machineries to be flown in, international experts, Prime Minister office, which is very closely and keenly monitoring the entire situation which is going on, the entire rescue operation which is going on. Prime Minister, being briefed on a daily basis by Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. So, all efforts are being put in by the government, respective governments and other agencies involved to ensure that the ongoing rescue operation results in absolute safety for those 41 who are inside trapped, and medical facilities have been lined up outside the tunnel to ensure that that there is no precious time is lost in providing them initial medical care. After that, they are likely to be taken to AIMS in Uttarakhand, where they will be administered any kind of medical help if they require. Psychologically also, imagine being inside that tunnel for 10 plus days. It's something which nobody could bargain for in the life, and those people are there. But what is best, the best part of the entire gig is that that they are safe inside the tunnel, and most likely in the next 24 to 48 hours they would be outside that tunnel. Let's listen into what Lieutenant General Syed Ata Hasnan has to say about the ongoing rescue operation. कपड़े भी चले गए हैं, दवाएं काफी तादाद के अंदर वहां अंदर पहुंच गई हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, वो सब अंदर भेजा गया है। आइसोलेशन, एक चीज आइसोलेशन होती है जिससे मानसिक असर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको भी दूर करने के लिए साइको सोशल काउंसलर्स वहां लाए गए हैं। और अब क्योंकि कम्युनिकेशन बन गया है प्रॉपर, पहले तो एक क्रूड कम्युनिकेशन मेगाफोन के जरिए और पाइप के जरिए था, अब तो लाइन के जरिए वो कम्युनिकेशन बन गया है और डायरेक्ट बात हो रही है वहां से। तो उसकी वजह से साइको सोशल काउंसलर्स जो हैं उन्होंने उनसे बात भी की है वर्कर्स के साथ। नेचुरल लीडरशिप इन स्थितियों में हर दफे आती है, जहां पर भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल जहां पर होते हैं वहां पर हर दफे एक लीडरशिप आती है। इस केस में भी एक फोरमैन और उसका एक असिस्टेंट, एक उसने लीडरशिप अज्यूम की है, यहां तक कि उसने ये भी बताया है कि वो आखिरी में आएगा। ही विल बी द लास्ट पर्सन टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम इनसाइड। He has got that much of confidence on himself, that much of confidence on all the assistance which is being done to take him out, all the confidence in the equipment जो वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 20 साल का उसका तजुर्बा है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। So that is a very good thing because he's a natural leader। जब आ जाता है अंदर तो ग्रुप जो है उसके अंदर और थोड़ी ताकत आ जाती है। So having said this much, it's also important to know कि जगह जगह से जो रिसोर्सेस आ रहे थे, ड्रिलिंग मशीन्स आ रही थी 4 अलग अलग दिशाओं से इसको अप्रोच करने के लिए, वो मशीनें अभी भी आ रही हैं, कुछ बिल्कुल हाल ही में पहुंच गई हैं। सड़कें वहां पर पूरी तैयार हैं, बेसिस जो हैं वो भी बन चुके हैं, और वहां जैसे ये मशीनें पहुंचेंगी वो कोशिशें भी शुरू हो जाएंगी। दिस इज टू केटर फॉर रिडंडेंसी, कि रिडंडेंसी इस तरह के ऑपरेशन में निहायत जरूरी है। अगर एक जरिया फेल हुआ तो हमारे पास कम से कम 1, 2, 3 और जरिए हो सकते हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे, और उन जरियों में शायद वक्त और ज्यादा लगे, जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वहां से बहुत आश्वासन आ रहे हैं कि अगले 2 घंटे में, दिन के शायद बीच दिन में, या आखिरी लास्ट लाइट शाम तक, या कल सुबह, सब लोग टाइमलाइन लगा रहे हैं इसके ऊपर। और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये ऑपरेशन जो होते हैं ये लड़ाई की तरह ऑपरेशन होते हैं, इनके अंदर टाइमलाइन कभी नहीं लगा जाती है, क्योंकि लड़ाई के अंदर भी आपको काम सामने मालूम नहीं कि दुश्मन क्या करने वाला है। इसमें आप समझिए कि जमीन जो है आपका दुश्मन है,
हिमालयन जियोलॉजी वो है, वो दुश्मन है। जो टनल कोलैप्स हुआ है उसके अंदर किस एंगल से गर्डर गिरा है, किस एंगल से कंक्रीट गिरा है, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। और यही चीज हुई है कल रात को, जब अंदर ऑगर गया है तो उसको एक गर्डर मिल गया और गर्डर को पार नहीं कर पाया, तो फिर पूरे जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया गया ऑगर को निकालने के लिए, अंदर ऑक्सीएसिलिन टॉर्चेस भेजने के लिए, उसके बाद ऑक्सीएसिलिन टॉर्चेस से उनको गर्डर्स को काटने में। इस सब चीज में वक्त बहुत ज्यादा लगता है और कोई ये नहीं कह सकता कि 2 घंटे में हो जाएगा ये। तो और ये काम बड़ा आर्डुअस काम होता है, इसके लिए स्पेशलिस्ट जाते हैं अंदर। जो इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जब ऑक्सीएसिलिन के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पर 1.5 घंटे का सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है ऑक्सीजन का। जब वो 1.5 घंटा खत्म हो जाता है और आपका काम पूरा नहीं हुआ है तो आपको बाहर निकलना पड़ता है और दोबारा नई ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। तो ये काम एक एंक्लोज्ड स्पेस में, आप समझ लिए तकरीबन सबमरीन की तरह, सबमरीन में तब भी ज्यादा स्पेस होती है, ये एक पाइप के अंदर हो रहा है ये काम। तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला काम है ये। तो इस पे हर वक्त ये उम्मीद रखना कि अगले 2 घंटे में हम निकाल लेंगे, ये मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। इससे क्या है कि वर्कफोर्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस स्थिति में वर्कर्स जो हैं वो रिस्क पे हैं और उतनी ही रिस्क पे जितने सब स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पर, जो रेस्क्यू टीम है वो उतनी ही रिस्क पे है। तो बोथ आर एट रिस्क, अंदर जो उसको रेस्क्यू करना है और जो रेस्क्यू करने वाला है, बोथ आर एट इक्वल रिस्क। परसों रात से काफी फासला अंदर बढ़ चुका है, 22 मीटर पहले था, तकरीबन 45 मीटर तक पहुंच गया था कल रात को। उसके बाद और प्रोग्रेस हुआ था जब तक कि ये बाधा पड़ी थी। सुनने में आया है कि अभी दोबारा थोड़ा रुकावट आई है, उसको दूर की जा रही है उस रुकावट को। तो ये रुकावटें 10, 12 या 15 मीटर जो आपकी रह गया है उसके अंदर 2, 3 या 4 दफे और आ सकती हैं और ये वही कार्रवाई आपको रिपीट करनी पड़ेगी पूरी। जो ऑक्सीएसिलिन के साथ आपने गर्डर्स को काटा है या क्या मालूम सामने कोई कंक्रीट का ब्लॉक आ गया है, जो कुछ भी करना है आपने उसको दोबारा करना पड़ेगा, तो उसमें वक्त लगेगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है डिले होता रहेगा, मगर सरकार की तरफ से जो बाकी दिशाओं से कोशिशें होंगी उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। दैट वी विल कंटिन्यू। सुविधाएं बन गई हैं, जहां पर 2000 लीटर पानी हर घंटे के लिए चाहिए था, उस दिशा में वो बंदोबस्त हो गया है। उसका जो ड्रिफ्ट चैनल, एक ड्रिफ्ट तरीके से जो काटना था, स्क्रैप करना था टनल का जो कोने जो थे उनको, वो काम भी शुरू हो गया है। कोर ऑफ इंजीनियर्स आर्मी की वहां पर है, वो फैब्रिकेशन भी शुरू हो गया है, जो इक्विपमेंट वो फैब्रिकेट कर रहे हैं इसके लिए। ब्लास्टिंग का काम उस तरफ से, बरकोट की तरफ से ब्लास्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। तकरीबन 8-9 मीटर का एक्सेस भी बन गया है वहां पर। तो ये सब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऊपर से 6 इंच की पाइपलाइन, एक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन लगाने के का भी काम शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें रिडंडेंसी होती है। अभी आपके पास एक 6 इंच की पाइपलाइन है, एक 4 इंच की शाफ्ट है, तो अगर एक और 6 इंच की पाइपलाइन आ जाए तो और भी अच्छा होगा। ऑक्सीजन भी जाएगा, आपके पास रिजर्व के तौर पे एक और एक्सेस रूट लॉजिस्टिक्स के लिए बना रहेगा। बात आई आखिर में पोस्ट रिकवरी, या आप रिकवरी की भी बात कर सकते हैं, रेस्क्यू की भी बात कर सकते हैं कि जब थ्रू एंड थ्रू हो जाएगा तो ये इनको कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए पिछले 10-12 दिन से एनडीआरएफ वहां पर है, 2 टीम है। डीजी एनडीआरएफ वहां खुद आज मौजूद हैं, आईजी एनडीआरएफ कल थे वहां पर, और रिहर्सल प्रैक्टिस जारी रही है ऑल दीज 10 डेज। हार्डी लोग हैं ये हमारे एनडीआरएफ के जवान, ये जानते हैं तरीके। इम्प्रोवाइजेशन किया है, स्ट्रेचर्स के ऊपर पहिए लगाकर स्ट्रेचर्स को ऊपर नीचे खींचने का अभी रिहर्सल किया है, क्योंकि सबसे तेज तरीका होगा कि आप स्ट्रेचर भेजिए अंदर, इधर से तार बांधिए या रस्सी बांधिए, उधर से रस्सी बांधिए, स्ट्रेचर के ऊपर एक वर्कर को लेटाइए और इसको खींचिए पहियों के जरिए। अगर आप कोई अड़पन आती है तो फिर क्रॉलिंग करके, अगर अपने बल पे क्रॉलिंग करके आना पड़ेगा 65 मीटर,
तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा और उसमें खतरा भी होता है कि कोई किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को साइकोलॉजिकली कोई असर हुआ है, तो इस तरह से उसमें अड़पन आती है। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका जो है स्ट्रेचर्स का वो अपनाया जाएगा और उसके अंदर कोई अड़पन नहीं आएगी। This was Lieutenant General Syed Ata Hasnan, who was telling us about the latest which is going on in the ongoing rescue operation. For the latest updates which are coming from Uttarkashi, do stay tuned to News9 Live, and thank you for now. China won't let us rest easy on our borders, but they will keep flooding our markets. What does Xi Jinping really want? I think he wants the Indian market, no doubt about it. It's really a matter of showing their dominance. India's great Chinese conundrum. Nobody can contain it. Not the United States, not China, not anybody else. Frenemies. This and more. Streaming on the world's first news OTT, News9 Plus. Download now. Life begins at first breath. We take a breath every 5 to 6 seconds. A normal adult breathes 12 to 20 times per minute. That's approximately 23,000 breaths in a day. What if every breath you take kills you?